Is this PPT visible to everyone? Yes, sir. Okay, thank you. Oops. So, sure. Okay, today we're going to discuss about the electromagnetic spectrum, and basically we'll discuss that the visible light spectrum and how it works, right? And the color system. So the firstly that we'll discuss, you guys know that in physics, you have already read about what is electromagnetic spectrum is. It's just the range of all types of electromagnetic radiation, basically, you can say. And radiation is just the energy that travel and spread out as it goes, basically. So the visible light that comes from a lamp in your house and the radio waves that comes from a radio station are two types of electromagnetic radiation. There is other types of radiation too that you can say in the microwave, infrared, ultraviolet, X-ray, gamma, right? So the many kinds of, but what we will discuss today is visible light spectrum. So here you can see, one second. Oh, sorry, my camera was. So here you can see it's not the it is the part of electromagnetic spectrum, and this is a called visible light spectrum in which you can see the lights basically, you know, from red to violet. So basically, what is visible light spectrum? This is just the light that is visible to human eye. So that's the called visible light spectrum. And before that, ठीक उससे पहले जो है that's called the ultraviolet, and after that it's called the infrared, right? So here you go. So you can read this one. So now you can say before a visible light spectrum and after the visible light spectrum. What is before? It's called the ultraviolet. After that, is called the Infrared. infrared. Infrared, right? So what is light is right? Light is just the form of radiant energy that is called light. Basically, the light को define करना in a single word is just the radiant energy which is visible basically. जो दिखाई देता है that is called the light, right? So in visible spectrum, how it works, or no, just read this one कि कितने types के होते हैं, radio, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, gamma, and where they can use. I think some more in MCQ कहीं पर आया हुआ भी था, so you guys can read it out. Sir, can we describe light like
electromagnetic spectrum from 380 nanometer to 740 nanometer. We'll, It, we'll come, we'll come to that point. Firstly, see what is the electromagnetic spectrum is. So there's a variation. So from where it has started and where it goes. So beyond इससे विजिबल लाइट से पहले एंड विजिबल लाइट के बाद जो भी है दैट इज कॉल्ड, ये सारी चीजें होती हैं विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के बियॉन्ड और बिफोर, राइट. बट डेफिनेटली वी विल डिस्कस ऑन द विजिबल लाइट, हाउ इट वर्क्स, राइट. So here we go. As you can see, there's a certain number 740, 625, 435, 380. So basically what it is, it's called the wavelength, right? Every single lights, जो भी आपको the visible light basically have the certain wavelength, right? And that wavelength you can measure in nanometer, right? So here the number is 740 is for the highest wavelength is for the red basically. So red have the 740 and violet have the 430, 435. समहाउ कहीं कहीं गूगल पे देखोगे 380 भी लिखा हुआ रहता है, राइट. सो 430 टू 380 के रेंज, सॉरी 380 टू 430 के रेंज में जो है ये लाइट जो है आपका होता है, एंड इट्स कॉल्ड द विबग्योर बेसिकली. विबग्योर स्टार्टेड विद द वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर क्या विब जी, ग्रीन, येलो, orange and red basically, it's called Vibgyor. So it started from the lowest range, lowest nanometer to highest basically. So visible जो होगा, so that is called Vibgyor. से violet से लेके red तक के बीच में जो भी energy है, that is visible light spectrum. And you can see, I think सबने physics में पढ़ा होगा, why sky color is blue. पढ़ा है किसी ने? Yes, sir. Yeah, the reason is a scattering, right? The reason is a Yes, sir. scattering basically. The why? Because if it's appear blue, as you can see over here, the light which have the shortest wavelength, right? So if it started traveling in atmosphere, तो बहुत सारे molecules हैं आपके atmosphere में, right? Vapors हैं, droplets हैं, right? Gas हैं. तो जब light उससे टकराती है, तो after that क्या होता है कि लाइट स्कैटर्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. तो जिस भी कलर का वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो वहां क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा. स्कैटर्ड होने के कारण वो नीचे तक नहीं आ पाता है. सो दैट्स द वन रीजन आपको दिखाई नहीं दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है. बट यू कैन आस्क कि अभी तो आपने बताया कि जो लोएस्ट वेवलेंथ है दैट इज वायलेट, राइट. द लोएस्ट वेवलेंथ वायलेट है, तो वायलेट क्यों नहीं स्काई दिखाई देता है? वायलेट दिखाई देना चाहिए ना. हमें वायलेट इसलिए sensitivity of इसलिए नहीं दिखाई देता है. द रीजन इज कि ह्यूमन आई जो हमारे रॉड एंड कॉन्स हैं, मोस्ट सेंसिटिव टुवर्ड्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू, राइट. सो दैट्स द वन रीजन आवर डिजिटल कैमरास के सेंसर बने हैं, उसके जो प्राइमरी कलर्स लिए दैट इज रेड, ग्रीन, ब्लू, बिकॉज ह्यूमन आर इज मोस्ट सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस कलर्स. सो दैट्स द रीजन. इन स्काई जो है वो वायलेट भी होगा, बट द रीजन इज आवर आई इज नॉट सेंसिटिव toward that color. So that's the reason it's a pure blue. है ना? कोई कुछ पूछ रहा था, I think. Is someone asking something? no. Okay, ठीक. Thank you. Okay, what is the white light is the visible part of the electromagnetic spectrum made up of colors. The easiest way to see is to watch what happens when a beam of white light passes through a triangular lens called prism. ये देखा होगा आपने, see to this one. अगर लाइट प्रिज्म से पास होती है तो आपको क्या दिखता है? This Rainbow colors shape. is visible, right? यहाँ पर कलर्स बेंड होकर क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है. सो यू कैन सी रेनबो जो फॉर्म होता है बेसिकली क्या होता है, दैट्स द रीजन रेनबो फॉर्म कि ड्रॉपलेट से टकराने के बाद वो चीजें आपको दिखाई देती है. द सेवन कलर्स द वेवग्योर इज अपीयर्ड. सो बेसिकली इसमें सभी कलर्स है, वेवग्योर के सारे वेवलेंथ इस फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ की सारी फ्रीक्वेंसी इसमें है. जब वो सभी मिल जाते हैं देन इट्स अपीयर व्हाइट. जब सारे कलर्स मिल जाते हैं देन इट अपीयर व्हाइट. बट अगेन इट वंस
The prism bends the rays of white light at different angles. So the white light is split into rays of different wavelength. Each wavelength give you eye a sensation of different color, a color pattern like a rainbow. The color in the pattern are always arranged with the red at one end, orange, yellow, and green in the center, and blue and violet at the other end, according to like wavelength. सब अपने हिसाब से यहाँ पर दिखाई दे जैसे as you can see over here. Now again, if this bended light will pass through the another prism, what happened? Now see to this one. एक बार बैंड हुआ प्रिज्म से, फिर वही लाइट जो है दूसरे प्रिज्म से पास हो रही है, व्हाट हैपन, क्या होगा? White light. Again it will appear white because सारी लाइट फिर से मर्ज हो जाएंगी, राइट? So again it become the white light. Here you can see these colors. Here. A prism does not make or destroy color. It simply bend the light and split the color apart so we can see them next to each other. Sorry. चलो इतना होने को एक चीज और पूछते हैं देन what was the question is there was a question hmm, 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 hmm. क्या था at the daytime is at 12 am sorry 12 p.m. दोपहर के टाइम पे why sky is white is it why it's white Sun is ब्लू दिखता है directly क्या दिन above. के टाइम पे Sir, is it because sun's position is directly above our head and the light has to travel a less distance? the less distance so that's the reason all wavelength the shortest wavelength भी जो है वो भी आप तक पहुंच Scattered जाती है away. so that's the one reason it's appear white same things अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि one sun appear orange or reddish at the time of sunset the reason is the light had to travel from the far distance right so that's the reason many wavelength वो क्या हो जाए scattered हो जाता है बीच में ही so that's the one reason आपको क्या होता है reddish या oranges जो भी वहां तक wavelength पहुंच पाता है that is visible only और बाकी जिसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वहीं पर जो है वो रह जाते हैं सो दैट्स द वन रीजन एक दो क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर करो ओनली विजिबल रेज आर कॉल्ड Light. लाइट चलो व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ Vibja. Vibja. ढूंढिए आंसर raindrop may act as tiny prisms to bend light into a color pattern in nature called a सर अभी रेनबो जस्ट हमने पढ़ा LGB. क्या सर raindrops may act as tiny prisms to bend light into a color pattern in nature रेनबो yeah it's rainbow basically सो आप लोग क्या कर सकते व्हाट यू गाइस कैन डू मैंने अभी एक सैंपल आपको दिखाया व्हाट एवर थ्योरी दैट वी हैव डिस्कस्ड यू कैन मेक फ्यू क्वेश्चंस आउट ऑफ इट राइट कि like some MCQ or MSQ kind of things or subjective questions you can make जैसे कि previous classes that we have discussed about the lights and quality of lights you can make few questions or few subjective questions few MCQ kind of questions on which ये इसलिए मैंने सैंपल में डाला हुआ है कि कोई भी पीपीटी देखने के बाद यू कैन मेक योर ऑन क्वेश्चंस कि इससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं राइट दैट काइंड ऑफ थ्योरीज ना तो होगा क्या कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा
वन थिंग, एंड अगेन आपको चीजें फिर से रिकॉल भी हो जाएंगी, क्या इससे पूछा जा सकता है, बिकॉज सारे कुछ रिलेवेंस नहीं होंगे, सारा कुछ नहीं आ सकता है। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉम वेयर यू कैन मेक सम एमसीक्यू और अदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे कि अभी इससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ रेनबो फॉर्म, राइट, एंड व्हाई सन appear, sorry, sky appear blue, that kind of questions. चलिए, व्हाइट लाइट सोर्स के, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट इज सनलाइट, राइट, बट देयर इज अ मेनी सोर्स। अब सनलाइट ही तो व्हाइट लाइट दिखता है ना, बिकॉज सारे वेवलेंथ मिक्स होके आते हैं। सो व्हाइट लाइट किसे, सनलाइट को बेसिकली ट्रू ट्रू लाइट कहा जाता है बेसिकली, बट देयर इज अ मेनी सोर्स। एक लैम्प भी है आपका, फ्लोरोसेंट लाइट भी है, टंगस्टन बल्ब भी है, सो मेनी सोर्स, सो एवरी लाइट सोर्स विल emit some wavelength, right, and that particular wavelength have certain color, you know. So let's discuss on it. Now see, sun, candle, tungsten or fluorescent. Now see how wavelength in this particular light source have. ये सारे light source में कैसा wavelength होता होगा? See the sun have, which kind of wavelength the sun have? The mixture of all wavelengths and the सबकी जो वो है वो सेम है, right? सबका बैलेंस मिक्स है ना रे का, राइट, डिफरेंट वेवलेंथ है बट रेज जो है सबके मिक्सअप है, राइट, ऑन द सेम एंगल, सो दैट्स द रीजन इट्स appear white. See that the fluorescent one, फ्लोरोसेंट ज्यादा किस लाइट को एमिट कर रहा है, किस कलर को एमिट कर रहा है? रेड एंड ऑरेंज, राइट. So that's the reason in fluorescent light you feel that it's warm colors, right? Now see in sorry, in fluorescent tube ब्लू ज्यादा आ रहा है, राइट, ब्लू ग्रीन एंड येलो के काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है, रेड काफी कम है ना. सो दैट्स द रीजन ये थोड़ा सा कूल कलर लगता है, नॉट प्रॉपर व्हाइट, थोड़ा सा कूल कलर लगता है फ्लोरोसेंट में, वट एवर द हाउस होल्ड लाइट दैट यू कैन सी ना, दिखता है ये ड्यू टू दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ की, हर एक में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होता है, राइट. सो जिसमें वेवलेंथ ज्यादा होगा जिस भी कलर का, राइट, या जो भी कलर जैसा, बेसिकली जो भी कलर ज्यादा होगा उसी कलर का वो दिखाई देगा. सन एपियर व्हाइट, द रीजन इज कि वो सब में बैलेंस्ड है, बेसिकली सारे रेज बैलेंस्ड है सन में, सो दैट्स द वन रीजन इट्स एपियर व्हाइट. टंगस्टन में देखो रेड ज्यादा है, आप इसमें देखेंगे ब्लू ज्यादा है, सो दैट्स द रीजन इट्स एपियर ब्लूइश. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो स्लाइड के साथ एक चीज और बता देता हूँ कि इसमें आई थिंक मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि फिर भी हम सारे लाइट सोर्स ही हैं, राइट. द टंगस्टन बल्ब इज द लाइट सोर्स, फ्लोरोसेंट इज लाइट सोर्स, सनलाइट इज द लाइट सोर्स, राइट. सब अपने हिसाब से जो है रेज निकाल रहा है, रेज दे रहा है, राइट. जिसमें जिसका रेज ज्यादा होगा, रेड का ज्यादा है तो वैसा है, बट अनटिल अनलेस अभी भी हम फॉर शूटिंग पर्पस, फॉर सिनेमा पर्पस, वी आर नॉट यूजिंग दिस हाउस होल्ड लैम्प और लाइट, राइट. ये तो वेवलेंथ इसमें भी है, कलर तो ये भी दे रहा है. In cinema also we are using tungsten bulb, but not this kind of household bulb. In cinema we are using this kind of fluorescent light, but not the household fluorescent light. The reason is क्यों नहीं यूज करता है अभी भी. अगर आपने घर में कभी किसी के पास भी ऐसा कैमरा, you wanted to shoot inside your house somehow the fluorescent light or something else, you just choose whatever white balance you wanted to choose. You make your white balance perfect because you got to know that the fluorescent have the 4200 kind of things. You fix it up, but फिर भी you will feel there is certain kind of color cast over there. Am I right? Are you getting that kind of colors? Which kind of color you are getting outside in sunlight? Are you getting No, that sir. kind of color inside your house? No, sir. आप 5 6 10 लाइट भी यूज कर लो. If you ask me कि no, there is a less intensity, that's why it's up and no. You can use ample amount of light inside your house and you can click it. फिर भी आपको नहीं मिलेगा. रीजन है, there's a one thing called the color rendering index, CRI.
every particular light have the CRI कि how they rendered the colors from the object. आपको कोई भी चीजें कब दिखती हैं? There is a two things, absorption and reflection, right? एब्जॉर्ब होके जो लाइट आपको दिखाई देती है, जो लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, यू आर एबल टू सी दोज थिंग्स. So CRI made those things perfect. If the light have the proper CRI, so whatever the actual surface color of any objects, you will see that color, right? If your light have the proper CRI. So somewhat technically, if any light have the 100 CRI, that will produce a true color, and that is only with the sun only. Sun have that quality to produce a actual color whatever your object have. इसलिए देखा होगा घर में लोग बोलते हैं just purchase your cloth and anything at the daytime, right? So we'll got to know that exact color. कई बार you are wearing a white shirt or t-shirt inside your house, you feel that यार ये ना गंदा लग रहा है. Once you go outside, you feel the exact color of it. होता है ना कई बार. At the time of shopping, you can see that the particular light is falling on that colors. You feel that ये तो अच्छा लग रहा है, but बाहर लेके आते हो daytime, you feel that there's something different. The reason there is a certain light over there is a particular wavelength over there, right? Things is visible over there, but the reason there was no proper CRI. So if the light didn't have that proper CRI, so it's considered like 70 to 100 CRI for the cinema light or the for the actual skin tone and color tone that we are talking about. So if your light have proper CRI like this, started from the 70, so you will got proper skin tone. There should be no any color cast. As you can feel that color cast when you are shooting inside your home and with household light, right? अगर किसी में शूट किया होगा, you can feel that there is certain kind of color cast until unless तुम कुछ भी बैलेंस कर लो. ये होता है ना थोड़ा सा, फिर भी थोड़ा कलर बच जाता है. The reason that light don't have proper CRI. So किसी भी लाइट में, any cinema lights, many companies claiming that their light have the 100 CRI, but at least if the 90, 80, that will work, right? But our household light have the no limitations कि क्या होगा नहीं होगा. It's totally depend upon when once you have started shooting those things, you feel that yeah, it's nearby आ रहा है. So somehow nowadays there's many brands जो जिनकी CRI थोड़ी अच्छी होती, kind of Cisco, and वो very costly light it is. So that's the things. CRI full form is color rendering index. That's a CRI. अभी मैंने बताया how we see the color. The light rays from any source travel in all directions. Some of these rays hit the object we are looking at. Some of these rays bounce off the object and are reflected back to our eyes. And still other are absorbed by the object itself. Only the light that reaches our eyes enter the light sensitive cells there and sends message to the brain. कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट की एक खासियत है, वो ऑब्जेक्ट की खासियत है, वो एब्जॉर्ब करेगा. सो देयर दो टू थिंग्स विल बी देयर, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन. दैट सरफेस विल एब्जॉर्ब द सर्टेन लाइट एंड इट विल रिफ्लेक्टेड सम लाइट, राइट? तो जो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा ऑब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्ट करेगा, द रिफ्लेक्टेड कलर, यू आर एबल टू सी दैट कलर्स. वो फिर तुम्हारे ब्रेन को बताता है, ब्रेन कंसीव करता है, एंड इट विल गिव यू इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये रेड है ना. आंख ने देखा, दिमाग को बताया, वो समझ गया हाँ ये रेड है, ये ब्लू है, ये कलर है. दैट्स द रीजन यू आर एबल टू सी दोस्त थिंग. हमारा ब्रेन रीड करता है कलर को, है ना. नाउ सी द एग्जांपल ऑफ इट. What happened? Why you are saying the green leaf look green? है ना. So to it. बाकी कलर्स को क्या किया होगा, इसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, ग्रीन को रिफ्लेक्ट किया होगा, राइट? सो दैट्स द रीजन यू आर सीइंग दोस ग्रीन लीफ ओवर हियर. Welcome. We see the things in color, right?
जो भी दिखाई देता है हमें कलर में दिखाई देता है ना, राइट? So there is a two types of color system majorly, basically, that is additive color system and subtractive color system. As usual, through the name you can figure it out. Additive means you have to add it. Subtractive means you have to subtract it. Subtract didn't mean that, don't get it that you say निकाल लेगा. It means absorption or reflection. कि जो absorb कर लिया, जो reflect कर, that's called a subtractive, right? So basically, majorly we are working on additive color system. हम जो काम करते हैं additive color system पे काम करते हैं because we are working with the lights. So क्या, there are two different and quite separate system for creating color. Both system can create all color of the spectrum, but the method of arriving at this color is different and exactly opposite. One create by adding light and other by subtracting. Subtracting means simple है, रख के कोई हटाएगा नहीं, राइट? इट्स जस्ट द एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन. जैसे कि पेंट में, डाई में या इसमें आप देखते हो, दैट इज सब्सट्रैक्टिव कलर सिस्टम. और हम जो यहाँ यूज करते हैं फॉर द फिल्मिंग, फॉर द शूटिंग, दिस एडिटिव कलर सिस्टम. हम ऐड करते हैं कलर को. क्या करें? Starting with black, the absence of light, appropriate mixture of the additive primary colors of red, green, and blue light are added to create the color of a spectrum. If equal amount of red, green, and blue light are added, the result is white light. Red plus green plus blue is equal to white. The additive system used in some color printer and for some advanced photographic techniques. Probably the most common application of additive color we encounter is its use in creating television images. Basically, जो हम शूट करते हैं या जो भी चीजें आप देखते हैं, for that reason we are using additive color system because we use light. और लाइट में हम क्या करते हैं? ऐड ही करते हैं. If you had ever watched theatrical play, देखा है आप लोगों ने किसी ने? They are using different beam of light creating different kind of colors, right? देखा है कभी दो तीन अलग अलग कलर्स के लाइट मिलके एक स्पॉटलाइट पे आता है, क्रिएट सम डिफरेंट कलर्स. किसी ने थिएटर प्ले देखा है? यस तो सर, देखा होगा तो यू कैन, देखा सर. या तो रिलेट करोगे उससे. सो बेसिकली क्या हो रहा था वहां पर? दे आर एडिंग इट, राइट? वो ऐड कर रहे, सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, अलग नहीं कर रहे. सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एडिटिव कलर सिस्टम. कि दो कलर्स को आप, दो डिफरेंट कलर्स की लाइट को आप ऐड कर रहे हो, सो दैट्स बिकम द एडिटिव कलर सिस्टम. और एडिटिव कलर सिस्टम क्या कहता है? इफ द same amount of light, like the same amount of red, same amount of green, same amount of blue will be there, तो क्या होगा? It's appear white. Add करोगे तब, सब्सट्रैक्ट करोगे तब नहीं. सब्सट्रैक्ट का मतलब यहां मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं. इफ यू आर पुटिंग रेड लाइट फ्रॉम हियर, द ब्लू लाइट एंड द ग्रीन, इट्स appear white light. But if there is a white light is coming from somewhere, right? White light है जो आ रही है, right? Suppose sunlight आ रही है, and you put, you know, the filters, right? Any kind of filters. You put the red filter over there, red color डाल दिया आपने, फिर आपने ब्लू डाल दिया, फिर आपने ग्रीन डाल दिया. What do you think? What happened? सर वाइट ही आएगा. आते हैं इस पे. No, it will totally black. It will totally black because our filter is made on the system called subtractive system. आप एक चीज बताओ, आप कैमरे के आगे फिल्टर लगाते हो तो क्या करता है फिल्टर? फिल्टर का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्ब करता है ना. यस फिल्टर सर. एब्जॉर्ब करता है. इफ यू आर यूजिंग एंटी फिल्टर, व्हाट हैपन? अमाउंट ऑफ लाइट रख लेता है अपने पास. इफ यू आर यूजिंग यूवी फिल्टर्स, यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेता है. कहीं निकाल थोड़ी देता है, एब्जॉर्ब करता है, राइट? इट विल एब्जॉर्ब पासिंग द लाइट, जो लाइट आपको चाहिए. यूवी फिल्टर है तो यूवी को रोक लेगा, राइट? यूवी रेज के लिए बना है तो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा. यही है ना? यस तो सर. बेसिकली अभी जो एडिटिव सिस्टम है, दैट इज लाइट. बेसिकली फिल्टर इज फॉर सब्सट्रैक्टिव सिस्टम. जो फिल्टर है वो सब्सट्रैक्टिव सिस्टम है ना. फिल्टर का जो सिस्टम है दैट इज सब्सट्रैक्टिव सिस्टम. सो हाउ इट वर्क्स? रेड फिल्टर अगर निकलेगा तो बाकी लाइट को रोक लेगा, बाकी वेवलेंथ को रोक लेगा, है ना? वो जाने ही नहीं देगा, है ना?
तो बेसिकली ये जो रेड ग्रीन और ब्लू आप लगाओगे फिल्टर्स, इट विल अपीयर टोटली ब्लैक, है ना। वो पूरा का पूरा ब्लैक जाएगा आपका, वो व्हाइट नहीं होगा। बिकॉज एब्जॉर्प्शन चल रहा है, एब्जॉर्प्शन अगर आप रेड लगाओगे तो बाकी वेवलेंथ को ब्लॉक कर लेगा, फिर आगे वो ग्रीन पे जाएगा, ग्रीन रेड को रोक लेगा। बिकॉज ग्रीन ओनली अलाउ द ग्रीन लाइट्स, राइट। बाकी को तो एब्जॉर्ब करेगा ना, यू वांटेड द ग्रीन वन, राइट, दैट्स व्हाई यू फिक्स द ग्रीन, इसलिए आपने ग्रीन लगाया ना। यू वांटेड ग्रीन कलर्स ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई यू पुट द ग्रीन लाइट, ग्रीन फिल्टर ओवर देयर। अब जब फिल्टर के ऊपर फिल्टर स्टैक ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, इट्स अपियर टोटली ब्लैक। बट जब लाइट को मिक्स करोगे थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट, हियर मैं एग्जांपल से बताता हूँ, आई थिंक इफ यू गॉट कंफ्यूज्ड, here you can see the additive system. क्या हो रहा है, जहां तीनों मिल रहे हैं, okay. There is subtractive system of color starting with white light. Proper proportion of light are subtracted to form any color to the spectrum. This is done by absorption through filters or by absorption and reflection from paint, pigment, or dyes. If equal amount of the subtractive primary of cyan, magenta, and yellow are subtracted, the result is black. Right. The subtractive system create color by taking light away. The additive system create color by adding and mixing the lights. फिर अगेन वही कह रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज कि सब्सट्रैक्टिव अलग कर देता है, अलग नहीं करता, एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्शन, राइट। एब्जॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन है बेसिकली। सो दैट्स कॉल्ड द सब्सट्रैक्टिव सिस्टम। वो लाइट को अलग कर लेता है, सो दैट्स द रीजन द टेकिंग लाइट अवे। एडिटिव सिस्टम विल ऐड द लाइट, वो कलर ऐड करता है। तो दोनों के जो प्राइमरी कलर्स इज डिफरेंट। फॉर द एडिटिव कलर सिस्टम, सी द primary colors is red, green, and blue. For the subtractive primaries is, इसमें कुछ और दिख रहा है, cyan, magenta and इसमें एक ये आगे येलो आ गया आपका, सॉरी, हैव टू चेंज इट। ठीक है, येलो ये कलर यार ऐसा क्यों आ रहा है? आप लोगों के डिस्प्ले पे भी ऐसा ही दिख रहा है क्या? मेरे डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, रेड रेड जैसा ही दिख रहा है ये। तो नो वरीज, देखते हैं यहाँ पर। Here, additive system of color. If we take the three additive primary beam of light, red, green, and blue, and overlap them, we can see how they combine. कौन कौन सा कलर फॉर्म हो रहा है? For the secondary color, if you mix the red and green, इससे पे येलो। और अब ब्लू एंड ग्रीन को देखेंगे, क्या बना है, सियान बना है। एंड रेड एंड ब्लू बना है तो क्या बना है, मजेंटा बना है। मजेंटा क्लियर दिख नहीं रहा है, बट अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो आइडिया होगा। दैट्स कॉल्ड द, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, एडिटिव का ये प्राइमरी हो गया, तो ये सारे कलर्स क्या हो गए, बाकी तीन कलर्स सेकेंडरी कलर्स। The name of this color is secondary color. The red, green, blue primary hai. If you mix two primary colors, there is another secondary colors. If you mix two primary colors, there will be another color that called secondary color. So for the additive color system, if you mix red and green, it will appear yellow, right? If you mix green and blue, it will appear cyan. If you mix red and blue, what happen? It will appear magenta, right? आगे लिखा हुआ भी और क्लियर है, so you can see.
क्या करें? Where the green and blue light overlap, we see a greenish blue color that is called cyan. Where the red and blue light overlap, the reddish blue color magenta is formed. Where the red and green overlap, yellow is formed. और अच्छे से यहां समझ में आ जाएगा आपको. Now you can see कलर ट्रायंगल बना लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा. रेड टॉप पे रहेगा, ग्रीन ब्लू. यहां तक प्राइमरी सेकेंडरी कलर तक क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? No. नो, ठीक है, चलिए. You have to know that these are the primary colors जो यहाँ पर है, दोनों के मिक्स से जो बन रहा है, that will be the secondary. Here you can see red and green, green and blue, and blue and red. So दोनों से जो मिलके बन रहा है वो कलर्स यहाँ पर हैं आपके. The additive primary colors of red, green, and blue are on the points of the triangle. The subtractive primary color of cyan, magenta, and yellow are on the side of the triangle. On this triangle, any two adjacent color form the one in middle. Red and green form the color in the middle, yellow. Already we have discussed. No, this is important things that you have to know, or you have to, say it properly. Not right now. Abhi nahi. Even after that, you read the color wheels. If you remember color wheels in your mind, many questions answer you can, right? कि ये पैटर्न अगर आपको याद है, इससे आप बहुत सही से, कि सपोज आई आस्क यू कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो. अभी तुमने सेकेंडरी कलर कहा ना, सेकेंडरी कलर कौन सा होता है? दो कलर अगर मिक्स होंगे, राइट ना. मैं यहीं पर क्वेश्चन बनाता हूँ, ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है? सर रेड. सेकेंडरी कलर, सॉरी, आई एम आस्किंग सेकेंडरी कलर. कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ऑन कलर वेल्स अपोजिट द कलर, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जिसमें कि बहुत कॉन्ट्रास्ट होता है, दैट्स कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर. सेकेंडरी कलर इज जब दो कलर्स मिक्स होके बनते हैं, दैट्स ऑन द कलर वेल्स, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी. कॉम्प्लीमेंट्री इज अपोजिट ऑन कलर वेल्स. तो ब्लू के अपोजिट कौन सा है? Yellow. येलो. सो येलो बिकम योर कॉम्प्लीमेंट्री कलर फॉर द ब्लू. या येलो का जो है ब्लू होगा, ब्लू का येलो होगा. सियान का क्या हो जाएगा? सर रेड. ग्रीन का क्या हो जाएगा? मैजेंटा. मैजेंटा. सो बड़ा सिंपल है. आपको यहाँ पर क्या पता, कलर व्हील से क्या पता चल गया? प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर. एक और कलर होता है, अगर किसी को पता है तो. एनीवन नोस? क्या सर? एक और होता है, जैसे आपने प्राइमरी का, सेकेंडरी का, सर कॉम्प्लीमेंट्री सर का, एक टर्शरी. और कलर होता सर टर्शरी. है. क्या? टर्शरी कलर्स. नहीं नहीं. वेस एंडरसन की फिल्म देखी है? Yes, sir. He is using that color palette. It's called triadic color. Triadic colors. किसी भी कलर वेल्स के अपने आसपास के जो कलर्स को लेता है, जैसे रेड अपने कहाँ से, मैजेंटा से, इस साइड से लेगा, ऑरेंज से लेगा, ये जो कलर्स होते हैं ना, अपने ही कलर के आसपास के कलर्स को, दैट्स कॉल्ड द ट्राइडिक कलर. सर The मतलब. nearby of colors होते हैं, that's called the triadic colors. But right now we will discuss on the complementary. So opposite on color wheels is complementary. दो कलर जब मिक्स होंगे, it's called secondary color. So चलिए, I did it once. क्या कह रहा है कि
Different color are made by reflecting and absorbing. It's depend on surface. So for an example, if there is a white surface, suppose got a white paper you have, a white surface something, if the light will fall on that white paper, what happened? Did that white paper absorb that light? Is that white paper absorb that light? Sir, It will reflect, right? All amount of light, right? It will reflect that. And that's the reason we are using whiteboard, white thermocol to reflect those light, right? So if there is any white surface, the all light will fall on it. What happened? It will be reflected, whole lights. Now, the another is if there is a gray surface, वो क्या करेगा? What the gray surface will do? सर थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी एब्जॉर्ब. क्या करेगा? Gray surface absorb more of the rays and will look darker than a white object, right? And if there is a black, it will absorb all lights. It will not reflect that much of light, right? So it appear सर ब्लैक ब्लैक. black हो जाएगा या gray से ज्यादा, it will be darker than the gray, right? The same amount of light is over there, right? Same intensity, light have the same intensity of that light. Suppose for an example, the 1000-watt bulb on the same surface, but what happened? Due to absorption, right? Due to reflection, you can, that the reflecting, that's called the transmission, or absorbing. You can say that absorbing को subtraction कह सकते हो तुम कि जो absorb कर रहा है, right? So absorb की capacity, black have the different, gray have different, and the white have different, right? So that's the reason हम कुछ भी देखते हो, anything that is visible depend upon the how they transmit the light. ये reflect कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, तो जिस कलर को reflect करेगा and which color they absorb, right? The reflected color you are able to see. All of these objects, white, gray, and black, differ only in how bright they look. This depends on how much light is reflected and how much is absorbed by each. All of them are colorless or give a neutral sensation to the eye. Next one. This is for the example, you can see what happened. The first one is the white surface, another is the gray, third one is the black. Now see how light travel, how light reflected. In white one, the same amount of light is reflected. In the gray one, the less amount of light is reflected. In the black one, everything is absorbed. एक एग्जांपल लेते हैं. Take any surface for an example. A surface with equal amount of magenta and yellow pigments appear red when we look at it. When white light, red, green, or blue, falls on this red surface, the magenta absorbs, green ray form the light, and the yellow absorb the blue rays. Both magenta and yellow reflect all red rays, so the surface appear red. चलिए, question क्या है? There is a surface which have the equal amount of magenta and yellow. Equal amount of what? Magenta and yellow. यही है. So if you have that chart, देखते हैं यहाँ पर. And on that surface, हम color wheels पे चले जाते हैं यहाँ पर. Now see, surface, which color of surface is? सर मैजेंटा एंड येलो. Magenta and yellow surfaces. Now the white light is falling on it. The white light. And the white light का complement क्या क्या होता है? Red, green and blue, right? Let's make the white light. Red, green and blue अगर mix हुआ, it's become the white light. Again, in terms of additive color system आ रहा है आपके surface के ऊपर, on your surface that the additive color system is falling. So that's why it's the white light. It's because the red, green and blue is the primary color. And अगर तीनों को मिला दोगे, it's appear white light. So that light is falling on that surface. Now, which light yellow absorb? Which light yellow absorb?
जो सब्सट्रैक्ट करेगा किसको करेगा? नाउ सी दिस ट्रायंगल केयरफुली. See this triangle carefully. So blue. Yeah, blue. The reason is in additive color system, yellow की property क्या? What's the property of yellow? Red and green, right? तो subtract किसको कर रहा है? Blue को. Yellow की property blue नहीं है, right? Blue is not the property of yellow. है ना? यही हो रहा है ना? ये जो कलर है आपका, सियान क्या कर रहा है? सॉरी, क्या हमारा कौन सा कलर था? सियान और येलो था ना? कौन सा के? नो सर, मैजेंटा एंड येलो. वन सेकेंड, वन सेकेंड. सर मैजेंटा एंड येलो. वन सेकेंड. या हमारा क्या था? मैजेंटा एंड येलो. हाँ जी. हाँ, मैजेंटा एंड येलो था. लिख लो जरा. चलिए, हाँ. अब क्या हो रहा है? येलो क्या कर रहा है? ब्लू को कर रहा है, राइट? मैजेंटा किसको करेगा? मैजेंटा किसको करेगा? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैजेंटा इन एडिटिव कलर सिस्टम? मैजेंटा बना कैसे है? प्रॉपर्टी क्या मैजेंटा की? Red and blue. रेड एंड ब्लू, राइट? Blue. तो किसको सब्सट्रैक्ट करेगा? विच कलर विल सब्सट्रैक्टेड? Green. Green. ग्रीन, राइट? So which two color have been subtracted? When there is a white light is falling on the surface that have the magenta and yellow, right? So which color will be subtracted? सर ग्रीन कौन सा एंड कलर सब्सट्रैक्ट होगा? Green and blue. Green and blue. Which color left? रेड सर. Red. Now here is the answer. यस सर. Now that's the answer. Now if there any surface, तो कोई भी pigment ले लो आप, that surface is the equal amount of magenta and yellow, and then any white light will fall on it. So what happened? It will appear red basically, right? I think अगर किसी ने previously, if anyone have appeared in the last year, in 2021, I think, last year, if anyone appeared, there was a question. Same kind of question was there. The things is that the surface have been changed. There was some properties, some toothbrush, some like properties was there, and there is some red filter or green filter that they have used and have given you the certain situations. Which property will appear for the which color, right? So for this example, are you able to know these things? If we change the property, if we change the colors, you can calculate it, right? So every time if there is a certain kind of questions will comes, just make this triangle. So it will be easy for you to remember. Make this triangle roughly बना लो, and you can calculate those things. What will be the absorption? अभी it's now. अगर मैं ये नहीं दिखाता तुम्हें, is it easy for you to understand? नहीं ना, अभी exactly क्या पता चल रहा था? Magenta की properties red and blue. So what is left in terms of primary color? In terms of additive color, there is a three colors only. There is only three colors in primary: red, green, and blue. Magenta property is red and blue. Subtract किसको करेगा? It will subtract the green only, right? तो green को निकाल दिया, just green is outside. Now the yellow also, there is the same pigment. Yellow is also there. Yellow property is red and green. Subtract किसको कर रहा है? Blue को. So blue and green is subtracted now. So which color is left? That is red, right? So is it clear till here? Yes, sir. Subtract. यहाँ तक कोई, if anyone have any confusion, maybe होता है sometime first time to understand these things. Why it's happened? We are सर using word सब्ट्रैक्ट, subtract. Yeah. वही थोड़ा सा समझ नहीं आया. सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब हुआ मैंने? Absorption. अच्छा, Absorb. जो एब्जॉर्ब कर लेगा. Obviously ना, जो कर लेगा वो तो दिखाया. अभी मैंने आपको क्या बताया था सबसे ऊपर में? The first thing that we have discussed, how we see object. पढ़िए इसे. Read it clearly. How we see the object.
Sir, also about the tetradic and triadic color scheme, you talked about. Tetradic, it's a triadic color. A tetradic, I didn't heard about it. Triadic color it is, and later on I'll discuss it. The triadic color, and also I'll discuss on how they made the pictures on the triadic colors and the complementary colors. Right? How in pictures they use this color wheels, right? And how through the colors wheels you can create contrast. But triadic is mostly about red, green, and blue, and tetradic No, deals with. no, 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 no. Any color wheels का उस channel का कोई भी colors होगा, right? Okay, okay, sir. Nearby, any primary colors, nearby colors, if they use, that is called the triadic Yeah, colors. because I've heard Wes Anderson talking a lot of tetradic. So I got confused about it. Triadic colors, Moonrise Kingdom you can watch. Yeah, yes. That one is called Moonrise Yeah, Kingdom. same it, sir. 1 second. Give me 1 minute. You use wrong word. It's triadic color, it's not tetradic. Again, this PPT is. Where are seeing this PPT? ये PPT दिख रही है आप लोगों को? नो सर, पुरानी वाली। Same PPT, ना? यस सर। Okay. So now you got that. So अभी ये समझ गए आपकी how we see the object? यस सर। अगर आपको ये समझ में आया how we see the object, now you got your answer कि यहाँ क्यों ऐसा हुआ, because that particular surface have the property, वो उस कलर को तो दिखाएगा, because that color जो कलर जिससे बना है, right, in additive system that it has, जो उसकी property नहीं, it will reflect that colors, है ना? ये जो है, जो इसका किसका हो गया, देखिए जरा, सब्सट्रैक्ट किसको कर लेगा, ये ब्लू को, येलो क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट कर लेगा, मैजेंडा क्या करेगा, ग्रीन को कर लेगा, फिर बचा क्या, दोनों किसको रिफ्लेक्ट करेगा, दोनों रिफ्लेक्ट रेड ही करेगा ना, तो दैट्स द रीजन इट विल अपीयर रेड। ओके। वो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है मैं बता रहा हूँ, द प्रॉब्लम इज हियर, आई डोंट नो। अभी मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया था, if you use red filter, सपोज करो, why that white light appear red, something, if you use some filters on your light, red, green or blue, यूज करते हो, you are using it, why you only get the red color, why you are getting only red color, क्योंकि रेडी वो ऑब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट होगी। that filter only allow the wavelength that is red, the rest of the wavelength is absorbed by that filter, right, rest of the wavelength जो green and blue है, that is absorbed by that filter. The same things with any surface, कि why in any circumstances, in any तुम देखोगे कि any tree, mango is yellow, the leaf is green, right, the property of that green surface is to absorb all the lights and reflect green, that the mango is appear yellow, it will absorb all the lights, all the wavelength and reflect yellow, that's the reason you are able to see those things, that's the subtraction, that's the reflection. आता है शिवम उस पे, सेकंड रुक जाइए, अभी क्लियर है ये आपका? यस सर, आगे समझ। Yes, sir.
चलिए So, क्या I had a question. The previous question that you were talking about, I was solving the question paper, so I found that question. तो उसमें ना, there's a yellow filter and there are different objects. So like there's a white wall, there's a blue rack, and there's a toothbrush which is red, a magenta one, and a cyan bottle. So now other things I understood, but what would happen with the blue rack? There's the yellow filter and we have the blue rack. So which color would appear? we'll discuss on it. Right now we are not discussing on filter yet. Right now we are only discussing the filter of additive colors filters. We'll also use that the subtractive and complementary color filters also. अभी Okay, हम complementary color के filters पे भी जाएंगे. okay, okay. Right. Now ये पीपीटी थोड़ी बड़ी है और ये theory भी थोड़ा बड़ा है. तो we'll come to that point. Then you are able to solve that answer. Today you guys are able to solve that answer. Definitely. मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद कर लो. ना दूसरा क्वेश्चन है, अब इसका आंसर आप खुद कर लोगे. अब क्या है, यू कैन मेक अ ट्राइंगल ऑफ इट. क्वेश्चन क्या है, रेड ग्रीन ब्लू बनाइए. रेड ग्रीन ब्लू कलर डालिए. सियान एंड येलो पिगमेंट्स फ्रॉम ग्रीन बिकॉज द सियान एब्जॉर्ब the red and rays and the yellow reflect the blue rays. Both of the reflect the green rays. क्या मुझे वो वाला पीपीटी वहां लेके जाऊं मैं आंसर खोजने के लिए? द प्रीवियस वन, कलर व्हील्स और ट्रायंगल, कलर ट्रायंगल पे लेके जाऊं? क्वेश्चन समझ गए थे क्या था? Yes, sir. Cyan and yellow है, right? The white light is over there. So let's see this one. Now, cyan and yellow. किसको हटाएगा? सर यही रेड और ब्लू को हटाएगा, ग्रीन ही बनेगा. ग्रीन बचेगा, राइट? अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आर यू एबल टू गिव द आंसर? इट्स वेरी सिंपल. Just make the triangle, give the color's name and just answer it. बड़ा सिंपल है. कोई कंफ्यूजन यहां तक तो नहीं है ना? नो सर. So No, guys, sir. if you have any confusion अभी तक है तो दिक्कत है, फिर पूछ लीजिए. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. बिकॉज आप इसको समझ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, देयर इज मेनी क्वेश्चन यू कैन गिव आंसर्स, राइट? I just ask you 3 or 4 questions over there only, but you can make many questions from here. And also I will send you a few questions of it on color wheels and colors, right? But just take 5 minutes short break and we'll resume it. One more thing, Shivam, yeah, I just got confused. One second, क्या था तुम्हारा ये? हाँ, for the triadic color, I got confused. It's called what I am talking about. It's called the name of that color is. No, sir, you were right about it. But this West Anderson thing got us confused because he No, uses. no, 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 no. You are right. Actually, I got confused. I was talking on monologuous color. Yeah. I was talking on monologuous color, All of and this. I'm giving example of these things. That was confusing. Yeah. I was talking about monologuous color. Yeah, sir. Yeah. That is called monologuous color is just I'm sharing you that where it is. 1 second. Yeah, that was what I was saying. That was monologuous color. Triadic color is just make a triangle of colors that will make triadic colors.
किसी भी कलर से जस्ट यू कैन मेक ट्राइंगल, इट विल क्रिएट द ट्राइडिक कलर्स। जैसे कि ब्लू, येलो और इसका मिला लो, दैट्स बिकम द ट्राइडिक कलर्स। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, समवेयर विल बी। So after break, I'll just show it to you guys. The triadic colors in this example. Okay. Take a 5 minute short break. We'll resume it.
तो यहाँ तक हो गया था, you will finish over here, right? Now here's another situation. If you place a red filter, a blue filter and the green filter over a single light source, the result would be, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, it will be black. तो फिर से पढ़ लीजिए why it will be black. Filter work on the principle of subtractive color. It will help to think of filter as a sponge that absorb, basically. Subtract out जिसको कहते हैं या absorb कर लो. Now it will be more clear. Selective color of light and allow the remaining color to pass through. When you see red, green, and blue filter together in front of a single light source, you have absorbed or block out all the light. No light passes through. So you have created black, the absence of colors, basically. So if you put the red filters, if another light, after that you put another full filter that will absorb another lights, another colors of light. So there will be no colors, the absence of colors. Red, green, and blue filter do not add light because they are filters. They subtract from existing light. Each filter transmits its own color and subtract out the other two primary colors from white light. Our eyes only see the light that filter allowed to pass through. We do not see what the filter absorb or block out as usually. मैंने कहा आपको कि जो absorb कर लेगा, absorption you are not able to see whatever light that is transmitted, जो भी light वो allow करेगा to pass through it. That light is only visible. That light will be sound, right? A full strength red filter absorb green and blue light and transmit red. पूरे रेड कलर का कोई भी फिल्टर आप यूज करते हो, रेड को ही पास होने देगा. इट विल एब्सॉर्ब ग्रीन एंड ब्लू. अ फुल स्ट्रेंथ ग्रीन फिल्टर एब्सॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट एंड ट्रांसमिट ग्रीन, द सेम विद द ब्लू, राइट? तो किसी भी कलर का होगा तो अपने कलर को ही वो ट्रांसमिट करेगा. द रेस्ट ऑफ द कलर इट विल बी एब्सॉर्ब. हियर यू कैन सी दिस ग्राफ ओवर हियर. Second one. ये क्या लिखा हुआ? Each primary filter, red, green, blue, transmit its own color and absorb its complement. ये अपने कॉम्प्लीमेंट कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है. इफ यू कैन सी, रेड फिल्टर अगर रेड को पास होने दे रहा है तो विच कलर इट एब्जॉर्ब? ग्रीन एंड ब्लू. इन एडिटिव कलर सिस्टम ग्रीन एंड ब्लू मिक्स व्हाट कलर? सियान, राइट? अगर एडिटिव कलर सिस्टम में जाओगे व्हाट हैपन? एडिटिव में दो कलर मिला के क्या बनाता है? सियान बनाता है ना. तो अगर ये दोनों लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये सियान कलर का लाइट ही एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना? Now from here you got your answer. यहाँ से आपको धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर दो कि लाइट जो एब्जॉर्ब हो रहा है, whatever they are absorbing the light, so also the effect of this light absorption is on the color your object have, right? Because in that particular color, when your additive color system is adding two colors light, it produce another colors, right? So there's a system for the additive. Now the subtractive, यहाँ पर हम बात करें सिर्फ दो लाइट की कि लाइट एब्जॉर्ब क्या हो रहा है. when there is a red light filter, the system is whatever light that is falling, the system is subtractive system, right? बट जब वो जा रहा है वहां पर आपका कैमरा देख रहा है, दैट्स बिकम द एडिटिव कलर सिस्टम, राइट? तो यहाँ पर जो इस प्रोसेस को जरा ध्यान से देखो. सीधा अनदर वन. Just clearly.
तो क्लियर देख लीजिए इसे। Now, if you are using cyan, magenta, and yellow color filter, what happened? By using a cyan, magenta, or yellow filter and white light, each one transmitted to primary color and block out the other. See the chart below? And each filter absorbs the color opposite its own. Now see. क्या करें क्वेश्चन cyan, magenta? चलिए. Now here your answer is, if there is a filter is cyan, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? Green and blue. Blue. लाइट एब्जॉर्ब कौन सा कर लेगा? रेड, राइट? रेड लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा ना? Yes, sir. If you are using cyan filter over there, it will absorb red light and allow to pass blue and green, right? Now चलो अब एक आंसर ये देखो जरा. If you are using yellow filter, what happen? किसको absorb कर लेगा? Blue. ब्लू को? कर लेगा ना? किसको पास होने देगा? Red and green. रेड एंड ग्रीन को? रेड एंड ग्रीन को ही पास होने देगा ना. मैजेंटा क्या करेगा? सेम विथ अपने दो कलर्स को पास होने देगा, तीसरा कलर रख लेगा. यही हो रहा है ना जब आप प्राइमरी कलर्स वाले फिल्टर्स यूज कर रहे थे. व्हेन वी आर यूजिंग द प्राइमरी कलर्स फिल्टर, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू, that absorb two colors, right? When you are using secondary color filters, it's allowed to transmit two colors. That's the difference. The primary colors वाले, when you are using red filters, what happen? Green and blue will be absorbed, right? जब तुमने secondary use किया at that point of time, what happened? Now it's that secondary color allowed to pass two lights over there. The reason secondary color is made by two primary colors. So अपनी जो property, whatever properties of that secondary color, that allow that two primary color to pass out, right? तो यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा? लाइट पास हो रहा है. येलो वाले फिल्टर, अगर आपने येलो फिल्टर, इफ यू यूज येलो फिल्टर ओवर हियर, व्हाट हैपेंड? इट्स अलाउ ग्रीन एंड रेड, राइट? नो, क्या था तुम्हारे क्वेश्चन में? देयर इज अ येलो फिल्टर, राइट? Yes, sir. नो, व्हाट लाइट इट विल बी? क्या होगा बताओ? नो, देयर इज अ प्रॉपर्टीज. देयर वाज अ क्वेश्चन कि दे यूज अ येलो फिल्टर ओवर देयर, राइट? दे हैव यूज्ड येलो फिल्टर ऑन सम व्हाइट लाइट. नो, इसके बाद क्या हो गया? देयर इज ओनली टू लाइट, दैट इज रेड एंड green. Take an example. If there is something that is white, क्वेश्चन है क्या आपके पास? क्या होगा क्वेश्चन? Yes, sir. जस्ट सेंड इट टू मी. क्वेश्चन होगा तो So, से टू आंसर. yes, sir. There was a white wall, a blue stand, a हम्म. cyan shaving cream bottle, and a red and magenta toothbrush. हम्म. तो नाउ यू कैन गेट आंसर. दे सकते हो क्या आप? क्या होगा बताओ? यू आर यूजिंग येलो फिल्टर ओवर देयर. चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं. नाउ सी दिस वन.
तो इसमें क्लियर है कि आप सियान फिल्टर यूज करें तो व्हाट हैपन, रेड लाइट को कर दिया, ब्लू एंड ग्रीन लाइट को ट्रांसमिट होने दिया, यही है। येलो के साथ भी ऐसा चार्ट बना लो पहले तो, इसमें का चार्ट लाइक दिस, द कलर चार्ट लाइक दिस, एंड वॉट एवर लाइट दैट इज ट्रांसमिटेड, and now whatever the color of that surface, so when these two colors have mixed up, which color will be produced, कैसा कलर होगा ये? Has anyone solved this question? आइडिया लगा थोड़ा सा, दैट वी हैव डिस्कस्ड, अभी तो कह रहे थे आप लोग। चलो फिर पहुंचते हैं यहाँ पर। सॉरी, टेक्स्ट दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन भेज दो। In which year it was? 2021? I think so. Let me find it once again. 2021. Is anyone able to solve this answer? और इसके बाद थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, जल्दी लगाओ, because we don't have time. काम करते हैं, रुको, टेक योर टाइम, थोड़ा सा इसको और एक बार रीड कर लो, राइट, देन आंसर इट। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो देन इट्स maybe you are not understanding the process, so somewhere there is a problem. So sorry, 1 second. कोई बात नहीं, भेज देना तब तक, I'll discuss some other things. चलिए, so now we are just discussing that the additive color systems and how it works basically. So primary colors, as we have discussed, that is a red, green, and blue. Secondary colors, those colors achieved by mixing of two primary colors. Tertiary colors, those colors achieved by mixing of primary and secondary hues. Complementary colors, those colors located opposite each other on a color wheels. Or analogous, those colors located close together on a color wheels. That was a confusion. मैं analogous quadratic कह रहा था आपको, right? Now you can see this color wheels. ये वर्ड्स काफी यूज होते हैं, टेंट सेट्स, और ये जो सारे वर्ड्स हैं, जस्ट सी टू इट, ये होता क्या है।
easy to understand now. Now see what is hue is. जो प्योर कलर का प्योरेस्ट फॉर्म है दैट इज ह्यू. अगर टिंट कह रहे हो कि जिस ह्यू में आप वाइट एड ऑन करते हो दैट्स कॉल्ड द टिंट. टोन्स आप ग्रे ऐड ऑन करते हो दैट्स द टोन. एंड शेड्स अगर आप ब्लैक ऐड ऑन करते हो तो दैट्स कॉल्ड द शेड्स. एक बार इसे देख लो जरा. ओके क्वेश्चन है व्हाट इज सैचुरेशन इज. तो पढ़ाओ व्हाट इज सैचुरेशन. तो कुछ So it's basically the color itself. कलर. It's basically the color itself, saturation. Color itself. No, then there is a certain, then why there is a certain number of then the for the saturation from 0 to 100. There is the color, but the thing is that the true intensity of color is called saturation. Intensity of color is called saturation. Now the intensity you can increase or intensity you can decrease, right? That color have the certain intensity. So if you increase on 100% is the true intensity, the full saturated. If you made it on 0, it's become the desaturated. That word we have used technically, right? Technically हम word use करते हैं desaturated है और full saturation है. So here is an example you can see over here. If you decrease the number, what happened? Are you getting color of it? If you are increasing the number, what happened? You are getting true intensity of that color. That red have the particular intensity, right? So true intensity of any color is called saturation, right? So most of the time we got confused in two words, saturation and vibrance. If anyone is related to editing or कोई भी photo edit या कुछ भी करता हो, or either in your phone, mobile phone also, you have two options, saturation and vibrance. If anyone have used these things, यूज किया किसी ने नहीं किया है. फोन के कैमरे में भी होता है एट द टाइम ऑफ एडिटिंग ऑफ योर फोटोज एंड एट ऑल. Yes, sir, होता है. होता है ना. द थिंग्स इज दैट इन सैचुरेशन एंड क्या करे सैचुरेशन क्या करे जब आप बढ़ाते हो ना सारे कलर्स का सैचुरेशन बढ़ा देता है. वॉट एवर कलर्स इन साइड योर इमेजेस राइट. वाइब्रेंस उसी कलर का बढ़ाता है जो म्यूट होता है या डल होता है. दैट्स अ डिफरेंस. वाइब्रेंस पर्टिकुलर पार्ट का बढ़ाएगा जो कि डल है या कलर इज लाइक म्यूटेड कलर इज द. सो वाइब्रेंस क्या करेगा सिर्फ उस पार्ट की इंटेंसिटी विल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ दोज कलर ओनली. बट इन सैचुरेशन ओवरऑल वॉट एवर विद इन योर सीन वॉट एवर विद इन दैट इमेजेस वो सबको बढ़ाएगा. जैसे कि एज यू कैन सी ओवर हियर एज वेल एज द फ्लावर एज वेल एज दो उसके जो ग्रीन वो ली है वो भी आपको डिसैचुरेटेड दिख रहा है. यू सीन दैट. बट इन वाइब्रेंस वॉट एवर यू नीडेड उसी पर्टिकुलर एरिया का बढ़ाएगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल से दिस वन. Left one is vibrance on, another is saturation. Have you seen the differences? What happened? Saturation जब true बढ़ा दिया पूरा बढ़ा दिया आपने everything is looking saturated, right? When the face, hair, hand, and whatever the backdrop is, right? So that's a basic difference. Read it once though.
Is everyone able to copy this question? ये जो मैसेजिंग में है दिख रहा है आप लोगों को? ये मैसेज दिख रहा है सबको? Yes, sir. Everyone just copy that message. No? Just copy it. Copy it in Word file or anywhere. I'll do one thing. I'm just copying it. And, okay, I'll send it in the group. Leave it. I'll send it in the group. I'm just copying it. सर हाँ बताइए. Yeah. सर जो येलो फिल्टर वाला क्वेश्चन ही है, हम्म. उसमें ब्लू कलर को तो सर निकाल देगा तो कुछ कलर बचेगा ही नहीं, यही होगा क्या सर? आप color list लिखिए. Why I'm not answering right now? There's a reason. This I wanted to know that you guys have certain idea of not from today's class. अब वो कुछ समझ में आया नहीं आया. For that's the reason I'm not answering it. Okay ना? If I answer it, I'll not get to know that how many of you are able to know these things and how many of you are not. So just answer this question by tomorrow evening. Day after tomorrow, our classes, right? So by tomorrow evening, just send it to me so I can check those answers so I can discuss on it. Because one by one, if I started discussing over here, right? So that won't work so easily. I just by tomorrow I can check it out. So just send me those answers so I got to know that personally कि किसको प्रॉब्लम है, किसने नहीं समझा है, राइट? सो दैट विल बी गुड. एग्जैक्टली अगर मैं अभी आंसर दे दूंगा तो एवरीवन जस्ट राइट डाउन द आंसर्स. इट मीन्स आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्लियर नहीं हुआ है, राइट? आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं, आपने समझा नहीं है चीज़ों को. दैट्स वन रीजन आई एम नॉट discussing answer over here. I will discuss that answer day after tomorrow, but I just wanted to see how much you guys got to know that. Don't take help from Google or anyone else. Just think about it. Answer is there. No, no, just think about it. Just think about only the absorption and reflection. Answer is there. कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड व्हाट इज सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सरफेस क्या है. दैट्स द थिंग. देयर इज द आंसर ओनली. वहीं पर आंसर है आपका, राइट? सो दैट्स द रीजन. बट बाय टुमारो इवनिंग जस्ट सेंड इट टू मी, क्योंकि मैं कल ही चेक कर पाऊंगा रात में. बाय डे आफ्टर टुमारो आई जस्ट स्टार्टेड क्लासिंग इन इवनिंग, सो दिन में मेरे पास टाइम नहीं होगा. सो यू गाइस कैन सेंड इट टू मी बाय टुमारो इवनिंग बाय 4:30 और 5. सर कौन सी मेल आईडी में भेजना है सर? kishore.shr kishore.shr@gmail.com. gmail.com, right? You can send it to. क्या here that we are discussing over there ना, उस टाइम जो हम डिस्कस करते हैं इस कॉल, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. नाउ यू कैन सी मोनोक्रोमेटिक कलर्स क्या है. नाउ यू कैन से इट. द सेम कलर पैलेट के डिफरेंट ह्यूज के जो कलर्स होते हैं, इफ यू यूज दैट वन इज कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक एज एग्जांपल ऑफ मोनोक्रोमेटिक इज दिस वन. एक ही टोन पे द सिंगल कलर टोन हैव इज कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक, राइट? इसमें कौन सा टोन है? येलो का ग्रीन का टोन लिया हुआ है, राइट? येलो इज मोर येलो इज पेल येलो, राइट? So this is example for monochromatic image. Analogous is nearby जो तीन colors हैं, that is analogous color. Complementary, as we have discussed, opposite on color wheels, if opposite to each other, that's called the complementary color. Triadic colors, आप ये triangle पे देख लीजिए जो जो colors आ रहे हैं, that's become the triadic colors, है ना? जैसे कि for an example, for an example,
देख सकते हैं, for the complementary colors. The complementary colors means opposite होगा. It means there's a too much contrast. So it's simple. If you see the color wheels, you can see what happened in complementary colors. Totally opposite to each other. So that's the reason there's that kind of contrast. दिख रहा है यहाँ contrast? Analogous, those kind of colors. Nearby के तीन colors पकड़े हुए हैं, so that's called the analogous. Now the triadic, three different angles के जो colors हैं, that's called the triadic. जरूर छोड़ देता हूँ. वैसे these are the examples होंगे. This is a point that you can remember. You should remember ये line में भी आ सकते हैं in MCQ और MSQ. Or the hue tint, what is tones, what is shades, what is saturation. Maybe the 1 marks question. So just aware of these things. That's why I just open this PPT. You know. So there's things on colors that we have discussed today. So if anyone have any doubt, you guys can ask me. किसी को कुछ पूछना है guys, just ask me. So, like, when we talk about light, so Yeah. our primary colors are red, green, and blue, right? Yeah. But when we look at a color wheel like this one with this hue one, this is pigment wala color wheel because it has blue, yellow, and red as its primary. Which one? So what do we go with? Like the hue, this color wheel जो PPT में दिख रहा है अभी. This one. ये तो एडिटिंग Yeah, this पर्पस is ये दिस इज फॉर द एडिटिंग ना, ये वो वाला ही उठा के रखा हुआ है आपको. पिगमेंटेशन जो है इट्स फॉर द एडिटिंग पर्पस जो रहता है, फॉर दैट इट इज. so for us the primaries will always be red, green, and रेड blue. ग्रीन एंड ब्लू. दिस वन इज Right. Okay. फॉर यू. इट विल बी द रेड ग्रीन एंड ब्लू. जो हम देखेंगे ना, जो हमारा होगा, बिकॉज मोस्टली वी आर वर्किंग ऑन द एडिटिव कलर सिस्टम्स. तो इमेजेस हमारे बन रहे, दैट इज फॉर द एडिटिव कलर सिस्टम, राइट? बिकॉज वी आर डूइंग लाइट बेसिकली ना. Right. So that's our system is additive color system. ना हम जो काम करते हैं that's additive color system. But because without subtractive system, we are not able to see anything, right? We are not able to see. हम किसी भी चीज को देख ही तभी पाते हैं ना, when as in human beings हम किसी चीज को देख तभी पाते हैं when there is a subtractive system. कि things will absorb the colors, then it will be reflected. Whatever will be reflected, that color is visible, right? Our what color means what colors wavelength will be reflected. जो दिखाई दे रहा है that is, बल्कि जो एब्जॉर्ब किया और जो कलर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? सो दैट इज विजिबल. वो आपको दिखाई देगा. एब्जॉर्ब जो कर लिया दैट इज नॉट. जो रिफ्लेक्ट कर दिया वो कलर आपको दिखाई दे रहा है. सो इज द मिक्सअप ऑफ दोज थिंग्स. बट इन टर्म्स ऑफ कैमरा और लाइट अगर हम इसकी बात करेंगे, वी आर वर्किंग ऑन द एडिटिव कलर सिस्टम. बट when we use any kind of equipments like the filters, right? So that filters is for the subtractive color system, that you have to know that, because for the filters you know that filters क्या करता है, absorb करता है, right? आप अगर filters की capacity देखें, और आपने कभी reflect करते हुए देखा, have you ever seen the any filters? If you are using anti filters, have you seen that the anti filter is reflected the light? No. क्या करता है एंटी फिल्टर? इट विल एब्जॉर्ब द लाइट. there's a darker glasses होते हैं, so it will absorb. It will passes the less amount of light. Same with the another filters. कि कोई भी फिल्टर्स है वो एब्जॉर्प्शन पे काम करता है, एब्जॉर्ब करता है, रख लेता है, बाकी चीजों को पास होने देता है. तो मोस्टली हमारा जो कलर व्हील्स होता है वो आरजीबी वाले कलर व्हील्स, और रेड ग्रीन ब्लू वाले जो कलर व्हील्स हैं हमारे, जो हमारे प्राइमरी कलर्स है. बिकॉज आवर कैमरा द सेंसर इज हैव मेड ऑन द रेड आरजीबी पैटर्न, राइट? Human eye is more sensitive towards red, green and blue, right? So according to that हमारा सेंसर भी बना हुआ है ना? हमारे जो फिल्टर्स हैं, even on the digital camera, if there's a filters or there's a जो, because you know our digital sensor is not
basically digital. It's analogous sensor, right? We are using a word called digital sensor, but your sensor is analogous basically. So there is a mosaic of color, and that mosaic is made by RGB, not the different color pattern. So for that particular sensor also, it's just the red, green, and blue. They are doing mosaic of this RGB on sensor, right? So then your sensor is able to read colors because you तुम्हारे सेंसर को जो कलर ब्लाइंडनेस होता है तुम्हारा सेंसर मोनोक्रोमेटिक है. Whatever sensor that have made, na sensor is monochromatic. Sensor में कोई color नहीं होता. Only luminance value is captured in your sensor, right? So to make it color, we use RGB pattern over there. Red, green, and blue का pattern use करते हैं. So that's why our primary color is red, green, blue. उसी से बनेगा. अभी right now I'm just giving you example of theatrical play. They are merging the lights to make it white light. They are merging two lights to make the third lights, right? अगर दो लाइट आप एड ऑन कर दो तो तीसरा लाइट प्रोड्यूस हो जाएगा. सो बिकॉज इज द एडिटिव सिस्टम्स. सेम विद द फिल्टर्स. फिल्टर लगा दोगे जैसे कि लाइट के आगे आपने फिल्टर लगा दिया, राइट? एनी फिल्टर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू, इफ यू यूज द जेलेटिन और एनीथिंग एल्स, राइट? क्या हो जाता है? रेड ही क्यों दिखाई देता है? बिकॉज दैट व्हाइट लाइट इज मेड बाय द रेड, ग्रीन एंड ब्लू, राइट? उसी का वेवलेंथ होगा. उसने क्या किया? दो को एब्जॉर्ब कर लिया. सो दैट्स द रीजन ओनली रेड लाइट इज अलाउइंग टू पास. Rest of the light is over there. They absorbed by that particular filter. उसने क्या किया? उस फिल्टर ने absorb कर लिया है. Right? So that's the things. Anything else? Guys? Okay, Rohit. I'll send it to you guys. You're talking about the previous PPT, Rohit? I'll send this PPT, definitely. I'll send this one. So could you send both the PPTs? Previous one. Just let me figure it out. How much? Just let me figure it out. One more thing, yeah. How you guys are preparing for MCQ and MSQ? Because it's for the subjective only. And also the last classes I have given you some homework to write about the frame size, and take 4 shots example from 4 different movies, right? I think 1 or 2 of you have sent it to me. None of you have sent it to me. मुझे जो मिला है वो सर या सर वो मैंने हर एक शॉट का मैंने करा था, लेकिन हर मतलब एक मूवी से 2 शॉट मतलब 2 इमेजेस करने हैं या एक ही इमेज करनी है? one image is only, na. Do one thing. That's why I told you, because there's a 1 week time, so at least you guys are able to watch 4 films. The thing is that's why I told you to take the example from 4 movies. No. That's why I told you. Because you have to start watching films. For subjective, you must have to start watching films, then you are able to explain it. Because once you start writing about the films, अभी भी लिखना नहीं start किया आप लोगों ने, then you are able to explain in examination hall. It's not like the one day things कि अरे I just read it today and it will work. Right? There's a many things once you start writing, no, just start writing out. If anyone of you have started writing within 15 days, just see your writing when you started, or just look at yourself basically. Once you started writing about the films, what you write, and after 15 days or 20 days, see the differences, right? Right now, what happened once you start watching films? If you started watching only the, जैसे अभी मैंने example के कहा right now कि you have to write about the frame only, right? So you will get stuck at the only watching frames. अभी तो You नहीं forget about the lighting. 10 मिनट कुछ होगा ये. You just forget about to watching lightings, watching camera movement and everything. But after 10 to 15 days, at one go, you are able to see those things, even the lighting, even the composition, even the movement, everything. Because it need practice.
अभी क्या हो रहा है ये कि once you start watching about the films only, कि why they use that kind of frames only, you just forget about to watch or see the lighting of the film or camera movement. Things happen like that, right? So obvious, ये कोई बड़ी बात नहीं है, होता है ना ये, because it's not in your practice. The reason is, so जब तक देखना स्टार्ट नहीं करोगे, it won't help. है ना? मैंने इसलिए, that's the reason I told you to at least take 4 images from 4 different films. So within a 1 week, you are able to see those films. तो 4 फिल्म तो आप कम से कम देखते हो. But somehow it's your choice. So I was actually doing that assignment, but I remember you said 2 films, 4 type of shots from 2 films. 4 types of shot from 2 films. Just at Yes, least watch sir. 2 films, yeah. Just at least watch 2 films. Yes, I was going to send it to you tomorrow evening. Just send it to me. Both assignment, just send it to me tomorrow. So tomorrow I have time. So by tomorrow I'll just take it out and I can discuss So on it. also, we have to find all 4 type of frames from each film or one frame each film. No, two frame from each film. No? Then if I have asked you for the 2 films, then 2 frames from one film. No? Okay, sir. There will be 4 different frames. So then if I ask you for the 2 film, so maybe there's a 2 film. So from one film, there's a 2 frame only. So you only need to 4 frame. If from one film, if you took wide shot example, that's okay. From the same film, you can take whatever I have given you, mid shot or close or whatever, right? So Yes, sir. दो Okay. shot ले सकते हो एक film से. तो like that, if you 4 movies, sorry, 2 movies, so there will be the 4 shot only. Just explain it. That's it. Okay. So there was also another assignment to analyze the content, the movie. Contempt, yeah, contempt. You only send it to me. Yeah, 2 or 3 guys. Yeah, I have. Just say your mail ID, no? Yes, sir. Your mail ID is Aditya Krishna. Nitya. You have sent me short size analysis also. So Yes, sir. anyone have like सबके पास contempt है? Everyone have the contempt film? Yes, sir. Sure. Sir, I have also sent you the analysis for contempt. Vasudha, right? Yes, sir. No, so I got that. My Gmail have some problem here. It's not calling properly. Guys, जिसने भेज दिया है ना, like the contempt का ना, you can ping me on WhatsApp, the same file. Just ping that file on WhatsApp, ना. Because mail have some Sure, problems, sir. which somehow it's just a spam और किसी में जा रहा है ये. तो मेल तो करो ही, बट मुझे WhatsApp भी वो कर दिया करो, सेम फाइल ना. So it will easy for me, ना. Right? Yeah, sure, sir. Okay, Yes, dear. sir. Okay, dear. Thank you all. See you day after tomorrow. Okay. Good night, Thank you, guys. sir. Welcome, Thank dear. you, Good sir. night. Good night. Good night.